फिर से स्वागत है आपको। मैं गौतम, आज एक सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं द मेडल लेक्चर सीरीज। पहला क्लास किए थे थर्मास्ट्रेस के ऊपर। थर्मास्ट्रेस के ऊपर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है मोर सर्कल। बहुत सारे ऐसे आदमी है जो मोर सर्कल का नाम सुनते ही 100 मीटर पीछे भाग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं आया हूँ आपको समझाने के लिए। आज गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं मोर सर्कल को समझा के जाऊंगा। मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा मोर सर्कल के ऊपर। एक वीडियो में बात करूंगा थियोरी के ऊपर, और एक वीडियो में बात करूंगा उसका जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर। तो आज बात करेंगे मोर सर्कल का थियोरी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मोर सर्कल। ऑब्जेक्ट क्या है इस मोर सर्कल करने का। पहला क्लास जितना भी किए थे आपने देखा होगा, जो कि मैं लोड अप्लाई कर रहा था मेंबर के ऊपर, उसका जो डिफॉर्मेशन हो रहा था वो सिमेट्रिक हो रहा था, उसका डिफॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या बताएंगे, अगर लोड अप्लाई करेंगे तो मेंबर अगर रोटेट कर जाए विद इन 360 डिग्री एंड ऑरिजिन फिक्स्ड रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में कैसे हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे, कैसे हम मिनिमम स्ट्रेस निकालेंगे, और कौन सा एंगल में ये स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, ये सब कुछ निकालना है। तो ये सब कुछ निकालने के लिए मोर सर्कल का थ्योरी पढ़ना होगा। At first, we have to know that what is the object of this theory of Mohr circle. ये थियोरी ऑफ मोर सर्कल करके क्या होगा। पीछे के क्लास में मैंने बताया थे, अगर ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक लोड अप्लाई किया है तो इस स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन होगा, और वो डिफॉर्मेशन होगा सिमेट्रिकली, और इस डिफॉर्मेशन होने से इसके अंदर स्ट्रेन स्ट्रेस जनरेट होगा। यार डिफॉर्मेशन ऑफ दिस बॉडी इज सिमेट्रिकल, नॉट अनसिमेट्रिकल, एंड डिफॉर्मेशन इज लाइक दिस। अगर इस बीम का क्रॉस सेक्शन देखा जाए, लोड अप्लाई करने से पहले भी क्रॉस सेक्शन दिखने में ऐसा है, और बाद में भी ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शन ऐसा ही रहेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे थियोरी ऑफ मोर सर्कल के बारे में। ये लोड अप्लाई करने से पहले का क्रॉस सेक्शन है, और ये लोड अप्लाई करने से बाद जो क्रॉस सेक्शन हुआ है वो कंडीशन में दिखने में ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों बॉडी का ऑरिजिन सेम प्लेस में है, लेकिन ये रोटेट कर गया है इसका बॉडी। तो इसका एक्सिस रोटेट कर गया है। दैट मीन्स अगर ये एक्स एक्सिस है एंड अगर ये वाई एक्सिस है, ये लोड अप्लाई करने से पहले का, एंड लोड अप्लाई करने से बाद जो एक्सिस बन गया है वो है ये, एंड दैट इज एक्स, एंड दैट इज वाई, दैट इज एक्स डैश, एंड दैट इज वाई डैश, एंड एंगल इज थीटा। तो थियोरी ऑफ मोर सर्कल में हम सीखेंगे, अगर ये बॉडी लोड अप्लाई करने से रोटेट कर गया विद इन 360 डिग्री, तो उस केस में हम इसके बॉडी का जो स्ट्रेस कंपोनेंट है उसको कैसे निकालेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यह एक नॉर्मल कंडीशन का क्रॉस सेक्शन है। दैट मीन्स व्हेन डिफॉर्मेशन इज सिमेट्रिकली, फॉर दैट केस बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग cross section is almost same, but for this case that is before loading and that is after loading। इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें ऑरिजिन पॉइंट दोनों का फिक्स्ड है, बट एक्सिस रोटेट कर गया है। तो विद इन 360 डिग्री ये बॉडी कैसे भी रोटेट कर जाए, हम थियोरी ऑफ मोर सर्कल अप्लाई करके इसका जो स्ट्रेस कंपोनेंट है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं। Here this structure is a symmetrical structure, and from this structure we can easily say that from which plane maximum normal stress will generate. Here maximum normal stress generate from this plane, because that force is perpendicular with this plane and that both force is same। but if this structure deform unsymmetrically with unsymmetrical load, then क्या होगा, कौन सा प्लेन में मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा, कौन सा प्लेन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम थियोरी ऑफ मोर सर्कल से कैलकुलेट कर सकते हैं। At first we calculate normal stress and shear stress of the body after rotation। ध्यान से देखिएगा, जी हाँ आपको ही बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। That is unsymmetrically loaded structure, and from this structure we consider a small element। We just cut this element and draw here। So if we cut this element, stress component of this element is like this। Stress component on z plane, here sigma z is normal stress on z plane, and tau zy that is shear stress in z plane y direction में है, and tau zx that is shear stress in z plane x direction में है, and stress on x plane, here sigma x is the normal stress on x plane, and tau xy
that is shear stress on x plane y direction में है, tau xz that is shear stress in x plane on z direction, and sigma y that is normal stress on y plane, and here tau yx that is shear stress in y plane at x direction, and tau yz that is shear stress on y plane at z direction. That is the general state of stress condition. यहाँ पर मोर सर्कल में हम प्लेन स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे. तो प्लेन स्ट्रेस क्या है? व्हेन टू फेस ऑफ क्यूबिक एलिमेंट आर फ्री ऑफ एनी स्ट्रेस, द स्ट्रेस कंडीशन इज कॉल्ड प्लेन स्ट्रेस कंडीशन. If here we consider z axis, then two side, that means front and back side of this z axis. If we consider this both side of this z axis are stress free, then this figure is like as plane stress figure. That means here we consider sigma z equals to tau zx equals to tau zy equals to 0. After that, this figure is like as plane stress. That means remaining stress are sigma x, sigma y and tau xy. So except of this stress component all are free. तो अगर हम ये तीनों स्ट्रेस कंपोनेंट को फ्री कर देंगे तो ये फिगर दिखने में कैसे लगेगा? तो ये दिखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा. और ये पर कंडीशन जो है ये जेड प्लेन का है. तो जेड प्लेन का sigma z that is 0 and tau zx that is 0, tau zy that is 0 because that all are in z plane. और क्या है? tau xz that is also 0 because that is in z direction, so that stress also 0, and tau yz that is also 0 because that is in z direction. तो यहाँ पर shear stress tau yx and tau xy है and normal stress sigma x and sigma y है. So from this figure we just put the stress component on this 2D plane. Sigma x that is in x direction, and here also we put this sigma x that is in x direction. Here tau xy that is on y direction. Here I also put tau xy on y direction, and that is sigma y that is on y direction, and here I put also that is on y direction, and tau yx that is on x direction. Here I put also that is in x direction, and we symmetrically provide this both stress component on two side. So 2D plane stress figure is like this. Suppose that is a member and we apply transverse load and axial load on this member. So if we consider a small element from this member, then that is like this. We denote that is x direction and that is y direction. So that is sigma x, that is also sigma x, that is sigma y, that is also sigma y, and that is tau yx, and that is tau xy, that is also tau xy, and that is tau yx. We consider these all stress component are positive. That means for tension direction is outward. That means that both sigma x and both sigma y that all are positive. If this direction is inward, then that is negative, so that is positive. And for compression, that is inward direction, that is negative. And here all shear stress component are positive. Here two stress tau xy and tau yx both are called complementary shear stress. Here we denote that is dx and that is dy. So both tau yx generate a couple, and that is tau yx into dy, and similarly both tau xy generate a couple, that is tau xy into dx, and that is like this. We consider unit thickness of this element, and that is like this, that is 1. So यहाँ पर जो tau x है ये एक स्ट्रेस है, shear stress, and we know that shear stress into area that is force. So इस फेज में जो फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज F1, एंड इस फेज में जो फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज ऑल्सो F1 बिकॉज बोथ वैल्यू इज सेम. सो F1 इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया. यार स्ट्रेस कितना है दैट इज टाउ वाई एक्स, एंड एरिया कितना है दैट इज dx. सो एरिया इक्वल टू dx इंटू यूनिट थिकनेस दैट इज 1. So that is the value of F1. Similarly इस फेज में भी फोर्स जनरेट होगा and we denote that is F2. So F2 equals to tau xy into this phase thickness that is 1 and distance that is dy. So dy into 1 that is the area. So that is the value of F2. So suppose we denote this couple by M1
and this couple we denote by m2. So m1 equals to कितना होगा, m1 equals to f1 into perpendicular distance, that is dy, so f1 into dy, and that is equals to tau ix into dx into dy, and m2 that is equals to f2 into dx, and that is equals to tau xy into dy into dx, and that is equals to tau xy into dy into dx. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, यार इक्विलिब्रियम कंडीशन इज दैट m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, क्योंकि अगर m1 एंड m2 इक्वल नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा m1 इक्वल्स टू m2. सो वी राइट m1 इक्वल्स टू m2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा dx एंड dy, क्योंकि बोथ साइड में dx एंड dy प्रेजेंट है. सो from here we can write that tau yx equals to tau xy. So both side में जो shear stress generate हो रहा है वो equal हो रहा है. That means both complementary stress are equal. जब हम आरसीसी में बीम डिजाइन करेंगे तब देखेंगे हम सिर्फ वर्टिकल शेयर फोर्स को निकल रहा है, क्योंकि we know that vertical shear force equals to horizontal shear force. So that's why we calculate only vertical stress, and here vertical shear stress resisted by main bar and horizontal shear stress resisted by this stirrup. Now we calculate stress when body is rotate but origin is fixed. From this element we can say that ये एलिमेंट थीटा एंगल में रोटेट किया है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड from this figure we just cut a section here, that is theta, so that is also theta, and similarly that is also theta, so we can write that that is theta. So that is before rotation figure, and after rotation of this figure rotation angle is theta. तो ये पोर्शन मैंने कट किया और यहाँ पर ड्रॉ किया. नाउ आई पुट ऑल स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन दिस एलिमेंट. तो स्ट्रेस कंपोनेंट को इस तरीके से डिनोट कर दिया, और इस कटिंग प्लेन में जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज एक्ट डाउनवर्ड, दैट इज टाउ, एंड नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज नॉर्मल फ्रॉम दिस कटिंग प्लेन दैट इज सिग्मा एन. तो थीटा एंगल में रोटेट करने के बाद जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उस एंगल में, एंड जो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है प्लेन के नॉर्मल में, वो कितना जनरेट हो रहा है वो निकलना है. तो यहाँ से क्या निकलना है, ये टाउ का वैल्यू निकलना है, एंड सिग्मा एन दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकलना है, एंड हेयर टाउ इज शेयर स्ट्रेस. तो ये एलिमेंट रोटेट करने के बाद जो थीटा एंगल में प्लेन जनरेट हुआ है उस प्लेन में शेयर स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है उसे निकलना है हमें. We consider this plane area that is dA. So this plane area that is dA cos theta, and this plane area that is dA sin theta. Now from this figure we draw a line diagram. So here I draw a line diagram of force of this element, and rotation angle theta is that, so that is also theta, and that is also theta, and that is also theta. After rotation new coordinate that is x dash and that is y dash, मैंने पहले डिनोट किया था ये. So we need all force according to this line and this line, so we just break this all force on this two line. So here tau ix is the shear stress on this plane, so total force is tau ix shear stress into area that is dA cos theta. So we just break this force into two component, that is cos component and that is sin component. So we just denote this force by f1. So the cos component is f1 cos theta and sin component is f1 sin theta. Now we break this normal force into two component, because that is the normal stress, and area is dA sin theta. So we break this force into two component, and that is cos component and
that is sine component. We just denote this force by F2, and that is F2 cos theta, and that is F2 sin theta. Now we have to break this force also, that is stress along x direction, that is sigma x, and area, that is dA cos theta, that is this plane area. So we break this component into two part, that is cos component and that is sine component. So we just denote this force by F3, and cos component is F3 cos theta and sine component is F3 sin theta, and that tau xy is on this plane, and this force is tau xy into this area, that is dA sin theta. So this force is tau xy into dA sin theta. So we break this force into two parts, sine and cos. So we just denote this force by F4, and cos component is F4 cos theta and sine component is F4 sin theta. Now on this figure we apply two conditions. Condition 1 is summation of if x dash equals to 0, and condition 2 is summation of if y dash equals to 0. So from condition 1 we can write that. Now we put the value of f1, f2, f3 and f4. So f1 equals to tau xy dA cos theta, f2 equals to this, f3 equals to this, and f4 equals to this. So from this equation we can write that. Now we can write that sigma n equals to sigma x into 1 plus cos 2 theta by 2 plus sigma y into 1 minus cos 2 theta by 2 plus tau xy sin 2 theta, because we know that 2 sin a cos a equals to sin 2a. So from this equation we can write that sigma n equals to this equation. So that is the final equation of normal stress on inclined plane. That means that is the value of normal stress on this plane. So that is equation 1. We just arrange this equation in this format. That is equation 1. Now we apply second condition, that is summation of f y dash equals to 0. So from this diagram we can write that tau into dA plus f1 cos theta plus f2 cos theta minus f3 sin theta minus f4 sin theta, that is equals to 0. So now we just put the value of f1, f2, f3 and f4. So that is equals to tau into dA plus f1 cos theta, where f1 is that, so that is tau y into dA cos theta into cos theta plus f2 cos theta, where f2 is that, so that is equals to sigma y dot dA sin theta into cos theta minus f3 sin theta, where f3 value is that, so that is equals to sigma x into dA cos theta into sin theta minus f4 sin theta. So f4 value is that, so that is equals to tau xy into dA into sin theta into sin theta, that is equals to 0. So from that equation we can write that tau equals to sigma x minus sigma y by 2 into 2 sin theta cos theta minus tau xy cos square theta minus sin square theta. So that is equals to, we can write that sigma x minus sigma y by 2 into sin 2 theta, because 2 sin a cos a equals to sin 2a, and minus tau xy cos 2 theta, because we can replace this by cos 2 theta. So that is equation 2. So now from this equation 1 and equation 2 we can write that by equation 1 square plus equation 2 square we get, so we get this equation by arranging these two equations. Now we know that cos square theta plus sin square theta equals to 1. Here also cos square theta plus sin square theta equals to 1. Now we can write that from this equation. So that is the final equation. Here we just simplify this equation by putting sigma n equals to x, sigma x plus sigma y by 2 equals to alpha, and tau equals to y, and that is equals to r square. Now we just put this all value and we get, so that is the simplified equation. We know that general equation of circle, that is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square equals to r square, where coordinate of center of circle is alpha comma beta and radius of the circle is r. So here we get this equation after simplifying. From that equation we can write that here we arrange this equation as a circle equation, and this value of beta is 0, where center of this circle is alpha comma beta, that means that is the origin of this circle, and that is we can write that alpha comma 0, because beta is 0, and radius of this circle
r, and r equals to root over of this, so we can write that r equals to root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. So ultimately we get a equation of circle by arranging these two equation. If we plot this equation, then that is like, so here we draw a circle and denote the axis sigma and tau. Now we have to plot the origin of this circle, that is alpha and 0. That means that length is alpha and tau coordinate length is 0. That's why this point lie on this line. And what is the coordinate of this point? We know that radius of this circle is r, so we can write that this point coordinate, that is alpha plus r and 0. And similarly this point coordinate is alpha minus r and 0. Here that is the axis of principal stress and that is the axis of shear stress. Here that is the origin point, and maximum principal stress point is that, and minimum principal stress point is that. Here we denote maximum principal stress by sigma 1, and that is equals to alpha plus r. So what is the value of alpha? Value of alpha is sigma x plus sigma y by 2. So sigma x plus sigma y by 2 plus r. What is the value of r? And that is the value of r plus root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x square. That is the value of r. So we get major principal stress value. And what is the value of minor principal stress? Here we denote this minor principal stress by sigma 2. And similarly here sigma 2 equals to alpha minus r. So alpha equals to sigma x plus sigma y by 2 and minus r, and r equals to root over of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy square. So we get major and minor principal stress value. And what is the value of maximum shear stress? Here that is the coordinate of tau, that means shear stress coordinate. So maximum shear stress value is that, and that is the radius of this circle. So radius of this circle is the maximum shear stress of this condition. So you can write that tau max, that means maximum shear stress, equals to root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. So you get major principal stress, minor principal stress and maximum shear stress, and that circle is called Mohr circle. And equation of this Mohr circle is that. So from this circle we can calculate, after rotation of body within 360 degree with fixed origin point, major principal stress, minor principal stress and maximum shear stress also. That means stress component of this body. नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस डिटरमाइन कर लिया, अब क्या बताएंगे कौन सा एंगल में ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, इस नॉर्मल स्ट्रेस को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऑल्सो सिमिलरली इस shear स्ट्रेस को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर देना होगा। उसका जो वैल्यू आएगा थीटा का वो उस मेन इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो उसको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकल जाएगा। Now we calculate for which value of theta stress is maximum. That means normal stress is maximum, and for which value of theta shear stress is maximum. So that is the equation of normal stress. From this equation we calculate for which value of theta stress is maximum. So we derivative this normal stress with respect to theta. So d sigma n by d theta equals to, this term is cancel out, and derivative of cos is minus sign, that is equals to minus of sigma x minus sigma y by 2 into 2 sine 2 theta plus derivative of sine is cos, so 2 tau xy cos 2 theta. So for maximization of this normal stress we put this derivative equals to 0. So from that equation we get tan 2 theta equals to 2 tau xy by sigma x minus sigma y. Here that equation is for finding principal stress, that's why we denote this theta by p. So that is the main equation. From that equation we find the value of theta p. That means from general solution of tan theta we get this 2 theta p equals to n pi plus phi, and theta p equals to n pi by 2 plus phi by 2, where n equals to 0 1 2 3। आज मोर सर्कल का जो थियोरी है वही बोल रहा है। अगर इसमें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स को डिटेल में बताऊंगा इस थियोरी से कंपेयर करके, तो सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो फॉर व्हिच थीटा पी वैल्यू दिस नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू इज मैक्सिमम, that is maximum normal stress, and for which theta p value this normal stress is minimum, that is minimum normal stress. So we calculate maximum and minimum value of normal stress
So we understand the theory of maximization of normal stress. Now we go to calculate maximization of शेयर स्ट्रेस। मतलब बॉडी रोटेशन करने के बाद कौन सा एंगल में इसका शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, यही हम निकलेंगे यहाँ से। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। नाउ फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस शेयर स्ट्रेस we just derivative this shear stress with respect to theta. So d tau by d theta equals to sigma x minus sigma y by 2 into 2 cos 2 theta, because sin का derivative cos है, minus cos का derivative minus sin, so that is plus, that is 2 tau xy sin 2 theta, and from that equation we get tan 2 theta equals to minus of sigma x minus sigma y divided by 2 tau xy. Here we calculate for which value of theta shear stress is maximum. So here we calculate shear stress, that's why we denote this theta by theta s. From this equation we calculate theta s, and from this equation we can write that here tan 2 theta s equals to minus 1 by tan 2 theta p, because tan 2 theta p equals to 2 tau xy by sigma x minus sigma y, that's why that is this. And from this equation we can write that 2 theta p minus 2 theta s equals to pi by 2, and theta p minus theta s equals to pi by 4. I think there are a question, how can I write that? I give solution for this. Just assume a minus b equals to pi by 2. We take both side tan, so formula of tan a minus b, that is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b, and that is equals to, we know that the value of tan pi by 2 is infinitive, so we can write that that is equals to 1 by 0.0000001. So that is almost 0. If we divide 1 by this type of number, then that is almost infinitive. So from this equation we can write that 1 plus tan a tan b equals to 0, because if we multiply this term with this term, then its value tends to 0, that's why we put this 0. So from this we can write that tan a tan b equals to minus 1. So that equation is similar as this equation, and from this equation we write that this, and that is similar as this, that's why we write this 2 theta p minus 2 theta s equals to pi by 2. So today we complete theory of Mohr circle. Next day I will discuss about problems of theory of Mohr circle. तो इस तरीके से हम नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू निकल सकते हैं। शायद कुछ कंफ्यूजन अभी तक रह गया आपको, ये कंफ्यूजन जो है आपका नेक्स्ट क्लास में टोटली क्लियर कर देंगे। और एक बात है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अगर कुछ क्वेरीज है इस वीडियो के ऊपर तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करके आपका फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को, आपके क्लासमेट्स को हेल्प कीजिए। और बार बार आके मेरा चैनल का वीडियो देखने के लिए मुस्कुराहट के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।